Goa's Chief Minister Pramod Sawant, who also holds the iron key of Home Minister, now stands in a spotlight no leader wants. Why? Because Rama Kankonkar, the ST leader who survived a savage attack, has cast suspicion on CM Sawant and Tourism Minister Rohan Khaunte to have something to do with his brutal assault. He claims police lapses, leaks, pressure and political engineering, raising the question, can the Home Minister credibly oversee a probe in which he himself is under suspicion, or must this investigation be wrested away from the very throne that looms over it? If Rama is, as the CM says, politicizing the attack, why single out Sawant and Khaunte alone? Today, we unpack that charge and where this fight for truth might be heading. Yesterday, Rama Kankonkar walked out of Goa Medical College injured but unbowed. He says he gave a 3-hour video statement to the police, but that the statement was leaked, edited and misused. He accuses the probe of deep lapses, from the lost leads to mishandled evidence, and says that he has no faith in the Goa police. माझी खाना देना का दोस्त पूरा पूरा मास एक फाटला नाही रे अरे राव मी फुल मासे पुढची फाटी वा काय अरे आव सुरू करतो आव स्वतः मासे फाटी अरे मासे फाटी मारतो तुम्ही बस बोला अरे लाव तो लगा दे भी टूटा ऊपर कर मासे फाटी हमारे इतने पूरे ले लेते मासे फाटी क्या बस मासे व्हीलचेयर फाटी गया मासे व्हीलचेयर फाटी रे क्या पूरा ओय रामा कशी दिसता कसो असा पीछे लेकर ये वासा jangan Dracula. Dewan नवीन जीवित दिले मल्लिकार्जुन देवाक जेजू साहेबी नाईक आणि सगळे शिनेवले राखणदार सगळ्या मग किती उलयतलो हांवें ही परिस्थिती माझी हाडटली म्हणून हांवें केन्ना लायफान शिकूंक ना त्या दिसा इन्सिडंट घडलो हांवें सदांच देवाक तर पळोवंक ना पूण ती सायबीन मायचे भाशेन ती रोज पळयता ती येयली वाचोवपाक हॉस्पिटलान म्हाका पुंडलीक शेवरून पावयले देवाच्या रुपान ते एंजल्स आशिल्ले तांकां हांव डॉक्टर्स सौरभ डॉक्टर सौरभ डॉक्टर ग्रीष्मा डॉक्टर जीना कॅरल सगळे हे डॉक्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा
MS डायरेक्टर सगळ्यांनी जे पर्सनली मॉनिटर केले एवरी डे दे हॅव रिकवर्ड मी तांकां हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक्टिविस्ट भाव तेंच्यांनी फॅमिली म्हाज्या वांगडा उबे रावले म्हणजे फॅमिली वांगडा रावली तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं जो सगळे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लिडर्स सगळे एकठांय आयले जस्टीस मागपा खातीर तांकां हांव देव बरें करूं आज प्रिस्ट सिस्टर आनी सगळे जाण सगळे मौलाना आनी सगळे जाण आयले तांकां स्वामी तांकां सगळ्यांक म्हाज्या खायच्यान देव बरें करूं म्हणटा लास्ट 20 दीस एक जे चिंतून नाशिल्ले ते फेस करचे म्हाका पडले हांव सगळ्या मिडियान तुमकां सगळ्यांक जितले मिडियान सत्य मुखार हाडला त्या मिडियान हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आज परिस्थिती माझी हाडून सोडला फक्त गोंया खातीर आवड थोडेशा म्हणून हांवें 2 तारखेक म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवचो पडलो 2 तारखेक माझे स्टेटमेंट प्रॉपरली सारखे दिवपा खातीर हांवें माझे टॅबलेटी ज्यो न्हिदेची टॅबलेट आहा माझी ब्रेनाक लागून टॅबलेट दिल्ली बाकीच्यो सगळ्यो टॅबलेटी हांवें त्या दिसा खातीर स्कीप करच्यो पडल्यो म्हाका फक्त म्हाजे तकली सारकी सारको दिवचो म्हणून सांजच्या वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक ह्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक दिलो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजो स्टेटमेंट तुमी व्हिडिओ रिकॉर्ड करात आनी व्हिडिओचेर रिकॉर्ड करून तुमी म्हाका दिया म्हणून म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रेकॉर्ड केल्लो आसा म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान म्हाजे 100 पेजी बरोवन घेतल्यो त्या 100 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले म्हजेर एटॅक कसो जालो म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा कारणान विचारलें तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंद पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना दुसरी गजाल तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना मागीर जेन्ना ह्यो 100 पेजीचो स्टेटमेंट विचारतना जे जे इन्सिडंट घडलो जे जे म्हाका ते म्हणटाले आनी मारताले तेय हांवें तांकां सांगलें म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेन्ना म्हाका घट धरलेलो आनी बोटी मारलेल्यो तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेडयेचे अशे शब्द वापरलेले हेय बीन हांवें तांकां सांगलें तो मिंगेल काळोचो भुरगो आसा तेणी पोर्टफोलियो
एसटी पोर्टफोलिओ जाय घे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे भोड्यो पडटलो हेंय हांवें तांकां सांगिल्लें. गावडे तूं गोंयचो राखणदार काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली तेन्ना म्हाका घोट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूत मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. हे सगळे स्टेटमेंट इवन मारतना हांव मल्लिकार्जुन देवा म्हाका पाव रे म्हणून हांव बोवाळ घालतालो ताकी म्हाका देवाचें नांव घेतले उपरांत म्हाका सोडटले म्हणून म्हाका दिसलें. म्हाका तेंच्यांनी जितलें हांव नांव घेतलो तितलें ते म्हाका आपूण नांव हे घेवन खापरेश्वर जाय आनी परत मारप हे कंटिन्युअसली मारल्या. हे सगळें हांवें जे कितें कळ्ळें आनी मागीर जेन्ना तांच्यांनी म्हाजेर तकलेर मारले आनी हांगासर मारले तेन्ना हांव चक्कर येवन सगळो फूल पडलो थंयसर आनी तेन्ना म्हाका सारकें कांयच दिसना जाल्लें. म्हाजे तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय वासाचें हितून भितर भरलें तोंडाक घालें आनी परत आपटिला तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली गुवपाक लागली. हांवें पुलिशेक हेंय बीन सांगलें की हे जे सगळे सुरवात जी जाली ते खापरेश्वर देवस्थानाचे आनी म्हाजो एरेस्ट जो म्हाका कोलवाळे जेलीन घातलेलो तेन्नाच्यान ते सुरवात जाली. जेन्ना सीएमाचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्ले. 5 दिसाच्या रिपोर्टिंगान म्हाजेर 2 फावटी एटॅक जाल्लो. दुसरे दिसा रिपोर्टिंगाच्या तो पयलो एटॅक तातूंत मिंगेल आशिल्लो आनी 2 जाण भुरगे आशिल्ले. एकलो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो आनी एकटो इन्स्टिगेट फाटल्या आनी गाडी मारून मागीर इन्स्टिगेट करतालो की म्हाका हांवें हात उखलचो म्हणून. मागीर हांवें पुलिशेक रिपोर्ट केलो फोन करून आनी ताज्या नंतर मागीर परतूय 4 दिसां नंतर परत इन्सिडंट रातचो त्याच जाग्याचेर मातसो फुडें परतूय तेच जालें. रातचो गाडी घेवन आयले फाटल्यान मारले आनी हांवें सगळे व्हिडिओ थ्रू सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. सो ते एक सायडीन व्हिडिओ रिकॉर्ड करता, एका सायडीन चाकू दाखयता आनी एका सायडीन यो म्हणून सांगता. ते इन्स्टिगेट करताले आनी हे सगळे हांवें आगशी पुलीस स्टेशनान सगळे सांगिल्लें आसा, कंप्लेनीनूय सांगिल्लें आसा. हे सुरवात जेन्ना हांव म्हाजें रिपोर्टींग करतालो पुलीस स्टेशनान तेन्ना म्हाका लॉयरान सांगिल्लें की तुवें कोणाचे वाटेक वचप ना कित्याक तुजी बेल रिजेक्ट जावंक शकता म्हणून. सो ह्या टायमाचेर हे 2 इन्स्टिगेटेड एटॅक जे आसा ते जाले आनी हांवें PIक वचून कंप्लेन केली आगशी पुलीस स्टेशनान. PIन म्हाका विचारले आनी सांगपाक लागले की रामा आपल्याक दिसना तुका तो मारपाक येयल्लो, आपल्याक जाल्यार दिसता तो तुका भंय घालपाक येयल्लो. सो अशें म्हणून ते भुरग्यांक सोडले आनी ताज्या नंतर होच भुरगो जो मिंगेल म्हणटा तो त्या दिसा पयले फावटी म्हाका मिंगेल नांव म्हणून त्या भुरग्याचें कळ्ळें आनी होच भुरगो जो आहा मिंगेल तो ह्या 3ऱ्या एटॅकान हेतून मेळ्ळो. सो हांवें हे सगळो रिपोर्ट जो आहा वो पुलिसाक सगळे क्लियर कट सांगले. म्हाका इतलेंच वायट दिसपाक लागलें की एक सायडीन मनीस जिवाक लागून लढटा आनी दुसऱ्या सायडीन म्हाजीच बायल येवन रडटा म्हाजे कडेन सांगता की जे कितें तुवें उलयलां ते चेंज जाल्लें आसा. हांवें म्हजी बायल हांव आनी म्हाजो एडवोकेट म्हजो रिपोर्ट स्टेटमेंट घेता आसतना म्हज्या म्हऱ्यान आशिल्ली 3 वरां आनी त्या 3 वरांनी आमकां एकूय कॉपी दिवंक ना
आणि ती कॉपी जी आहा पळय ती मंजुनाथ नायकाक आमी एप्लिकेशन घातले आमकां दिया म्हणून, पूण ती तेन्ना आमकां दिवंक ना आनी आमचे कडेन व्हिडिओ बीन तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना. त्या व्हिडिओन म्हाजे सगळे इन्फॉर्मेशन आसा. पुलिसांनी तो व्हिडिओ आता व्हायरल केला जाल्यार खबर ना, पूण तो व्हिडिओ लोकां मेरेन दाखयचे. म्हाका जाल्यार दिसता की हे सगळे पुलिसांक A to Z हे खबर आसा आनी हातून सगळे प्लॅन करून वो 6 म्हयने कंटिन्युअसली प्लॅन करून म्हाजेर वो हल्लो जाला. आमी 3 तारखेक 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली. आमकां तो व्हिडिओची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो. ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला ती स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला. तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी जे हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयला आनी तेणी जे जे म्हाका विचारला तेतून हांवें क्लियर कट सांगला. ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून. तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले. केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजे हे बेल रिजेक्ट जावपाचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगले. पॉलिटिशनाचे हांवें सांगले की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळोवंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको. पळय मास्टर मायंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजे बायल त्या मिटिंगेक त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर मायंडाचे नासले. जरी तर हो मास्टर मायंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलीस स्टेशनांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचे दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्याय हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवांय घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान. म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा जे म्हाका मारताले ते भुरगे आमच्या आमदाराचे नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हे काम पुलिसांचे. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलिओ मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचे. पुलीस तेंचे एकूय अजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना. तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तेंकां अजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता. पूण तेंच्यांनी जे एटॅकर्स आसलो त्यांचो स्टेटमेंट भायर अजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हे इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना
दुसऱ्या मनशाक पावयले. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दिस. पूण ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता. ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना. सो पुलीस इज इन कम्प्लिटली इन कॉर्डिनेशन आनी लॅप्स जाल्ले आसा. आज पर्यंत म्हाका खबर ना की तांचे कडल्यान हे जे गोष्टी हांवें सांगला त्यो व्हेरीफाय जाला, तांचे प्रॉप्स कलेक्शन जाल्ले आहा. ते कोण पिंक शर्ट वालो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो, नाजाल्यार तो भुरगो कित्याक लागून म्हाका ही गजाल म्हणटालो, हे तेंचे कनेक्शन कितेंच आज पर्यंत पुलिसांनी सांगलेलें ना. आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना. आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्व्हेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता. एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो, FIR रेजिस्टर जावन ना, हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जेका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना, म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना. मार हांवें खाल्लो, अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता. म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. हांव आजून क्लियर कट सांगूंक सोदता की म्हजेर अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना. म्हजो फक्त क्वेश्चन, हांवें परत परत जेन्ना हे जालो अटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलिओ बद्दल आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हाजे चार आमदार एसटीचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला. आमचे 4 एसटीचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारला. सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय हेजे पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाल्यार एसटी विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा. आनी ह्या क्वेश्चनाक लागून म्हाका क्लियर कट सत्य दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशांक तांच्यांनी धाडला नाल्यार ते सुद्दां आजून पर्यंत ना. सो हेतून आनी काय क्लियरिटी हेतून घुसपडपाचें कांयच ना. दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हेतून शामील आसा ह्या कनेक्शनाक अशें म्हाका दिसता. आनी आनीक कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलिंग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा न्ही ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना. पूण ते इन्फॉर्मेशन समज इन्व्हेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार कांय गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरींग नाजाल्यार रिटायर्ड जज वीच डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे हांव दिवपाक. हांवें होम मिनिस्टर आनी परवरचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्लें. म्हाका त्याने मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनां जी विचारतालो की बाबा तुजेर कितें इन्सिडंट जालो, 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूंक ना. म्हजे कॉन्शियस सारकें धरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजे कारण. दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जे स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणी. मागीर ताका हांवें परत सांगलें ते होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर माग करून थंय होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका पुलिसांचेर म्हणल्यार मात्तूय विश्वास उरलेलो ना. गोवा पुलिसान करपाचें कितें ना करपाचें हे तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट आय हॅव नो ट्रस्ट लेफ्ट इन द पुलीस, इन द होम डिपार्टमेंट. एंड वेन आय एम सेयींग
द कनेक्शन्स विथ होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा आनी हे होम डिपार्टमेंट आसा तो मनीस या इन्व्हेस्टिगेशन जे पर्यंत आसा ते करूंक शकना. सो म्हजो रिक्वेस्ट हंबल रिक्वेस्ट आसा की हो इन्व्हेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर देन एनी डिपार्टमेंट अंडर दीस गव्हर्मेंट तो जावपाक जाय. सीट ते म्हाजे लॉयर जो आसा पळय आय विल टेक हेल्प ऑफ माय लॉयर आनी बाकीचे टीम. माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज हे इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आहा, हे फॅक्ट तुमचे कडेन दिल्ले आहा. जे जे मनशांचे 2 तारखेपर्यंत आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान एकूयदा हे 4 स्टेटमेंट जे तांच्यांनी मारताना म्हणलेले पोर्टफोलिओ रिलेटेड ना जावं गावड्या तूं राखणदार जावंक सोदता, आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता, हे एकाय हेजेर पुलीस डिपार्टमेंट भायर काडपाक रेडी ना. आनी ही सगळी स्टेटमेंटां म्हाका जाल्यार दिसता की हे पॉलिटिकली कनेक्शन आहा आनी पॉलिटिकली हे सापडत म्हणून हे सगळे थारावन जाल्ले आसा. आज पर्यंत जो हांवें स्टेटमेंट दिला हे हांवें स्टेटमेंट तुमचे कडेन सांगप नासता, पूण जे कितें स्टेटमेंट दिला कित्याक तो स्टेटमेंट ऑलरेडी पुलिसांक दिल्लो व्हायरल जाल्लो आसा. आनी फुडलो स्टेटमेंट समज म्हाका दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव मॅजिस्ट्रेटाच्या फुडल्यान नाजाल्यार इंडिपेंडंट एजन्सीच्या फुडल्यान दवरतलो. कित्याक आयज हे जे हांवें मुखार हाडलेलें आहा म्हणून आयज आनीक घातक म्हाजेर एटॅक जावंक शकता, आनीकूय प्रोटेक्शन मेळोंक शकना असो म्हाका विश्वास आसा की हेच्या नंतर जे फुडें कितें करपाक जाय ते म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका ह्या सिस्टमाचेर विश्वास उरलेलो ना, म्हाका फक्त म्हाज्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास उरलो आसा. आयज जितले गोंयचे लोक गांवांनी तेंच्यांनी अवेरनेस केले, त्यांच्या मुखार आयले, फक्त तुमचे कडेन एकूच मागणी करता म्हाका ज्या भाशेन मारला तेजो दर्द आयज रातभर ते ट्रॉमान आसता. पूण तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट करता की ह्या बारीक जे कोण हाडला आनी डायवर्ट करूंक सोदता आनी तांकां भितर घातलेले आसा हे धरून लोकांक उबी करपाक प्रयत्न चालू आसा. ज्या पर्यंत ज्या पॉलिटिशियनांनी जे कोण इन्वॉल्व आहात तांकां ज्या पर्यंत तांकां अरेस्ट करिना आनी त्याच भशेन हांकां अरेस्ट केला तशेंच तांकां अरेस्ट करना त्या पर्यंत म्हाका न्याय मेळो म्हणून अशें चिंतचो ना. His prescription: hand over the case to an independent investigation agency, free from governmental influence. Then came the bombshell. He named Chief Minister Dr. Sawant and Tourism Minister Khante, suggesting they may be implicated in orchestrating the assault. This was not a personal vendetta, it was a political power striking back, Rama declared. Less than hours after Rama's explosive discharge statement, the corridors of power erupted in counterattacks. Sawant dismissed the allegations, baseless, fabricated,
politically sensationalized, he said. वो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्ता जो तिने कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशियनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना बट तेणी दिल्लो पयलींच्या स्टेटमेंट सगळे रिकॉर्डेड आसा अननेसेसरी इश्यू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता लोकांक खबर आहा गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी क्षुल्लक गोष्टी करपा खातीर हांगासर ना आनी त्या ती ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्व्हेस्टिगेशन हांवें सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या ओके आनी तेजें इन डिटेलान करतात इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केलो म्हाका खबर ना बट पयलीं दिल्लो स्टेटमेंट हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायता ताज्या उपरांत कळटलें त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न सरकार तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव कारण तेणी जे सांगलें त्या अनुसार सगळ्या जाणांक पयले फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केला त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हे पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या तेंपा उपरांत येता म्हटल्यार विचार करण्यासारकी गोष्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे सरकार किंवा पॉलिटिशियना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर केन्ना तरी स्टेटमेंट आसा. But that defense rings hollow when you realize he's running the very machinery accused of being biased. The Goa police went into full press mode. At a joint briefing, SP Rahul Gupta, the SDPO Sudesh Naik, sought to reassure the public the probe is clean. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसलिए बुलाई गई है कि जो रामा कानपुर का असॉल्ट केस है इसके अंदर में समय समय पे इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की गई है पर कल जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान भी रामा कानपुर का जो विक्टिम है इस केस में उनका स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया था लेकिन कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कुछ बयान दिया है और उस बयान को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ कि बोलना आवश्यक हो गया है क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े ही संगीन आरोप लगाए तो इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक कैरी की गई है उसके बारे में ब्रीफली हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं और मैं ये बताना चाहूँगा इसमें काफ़ी स्विफ्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं और जो भी एविडेंसेज हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी मैं आगे इसमें SP नॉर्थ को बोलूँगा कि जो बेसिक डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की शेयर करेंगे और उसके बाद SDPO कहेंगे भी बात करेंगे. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. तो जैसा सर ने बताया कि हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्विफ्टली एंड फेयरली की है. जैसे जैसे एविडेंस सामने आया है हमने इसमें कार्रवाई की है और इसमें किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं हमने दिखाया है. जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को एप्रीहेंड कर लिया था. वो हमने एप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द CCTV फुटेज. उसके जो फोटोज हमको मिले थे CCTV फुटेज के आधार पर उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उनका फोटो मैच कर रहा था. तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था. ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को. उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर. तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे जिनको हमने CCTV के फुटेज पर जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा. जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया. उन्होंने का नाम जो था वो था साइराज और फ्रांको. तो ऐसे 7 लोग हमने 2 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिए थे. उसके बाद इन 7 लोगों का हमने 48 घंटे इंटरोगेशन किया. जो भी और एविडेंसेस मोबाइल फोन्स जो हमको सारी चीजें मिली थी उसके बेसिस पे हमको पता लगा कि कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल है. जेनिटो कार्डोजो का नाम लिया 2 अक्यूज ने कि वो उनसे मिलके जेनिटो के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि मिंगेल फ्रांसिस और जेनिटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा कानकोनकर के ऊपर अटैक किया जाएगा क्योंकि रामा कानकोनकर ने मिंगेल और जेनिटो को टारगेट किया था समय समय पे और इनका पास में स्कफल भी हुआ था. तो उसके बेसिस पर हमने जेनिटो कार्डोजो को भी 21 तारीख को अरेस्ट किया. उसके बाद फिर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की रामा कानकोनकर जी का. लेकिन रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट देने से काफी टाइम तक रेजिस्ट किया. डॉक्टर ने ओपिनियन हमको दिया कि ही इज फिट टू गिव स्टेटमेंट बट टिल 2 October we were not able to get the statement.
Finally, on 2nd October, our IO was able to get statement in presence of wife of Rama Kankonkar ji and his advocate. The statement was video recorded also. और उस स्टेटमेंट में हमको जो चीज़ें मिली उसके बेसिस पे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है। अभी हमने इसमें टोटल सीजर जो हमारा हुआ है इस केस में, जो हमने केबल जो यूज की गई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, वो हमने सीज की है। 3 जो 2 व्हीलर्स थे जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, मैं अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमने एनालिसिस किया था, तो उसके बेसिस पर 2 व्हीलर्स 3 दिखाई दिए थे, उनको तीनों को हमने सीज किया है। अक्यूज के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद हुए, उनको भी हमने पंचनामा ड्रॉ करके अटैच किया है। तो ये सारी कार्रवाई बहुत जल्दी जल्दी अंजाम दी गई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने सेक्शन इसमें एड्यूस किया, क्योंकि ये अक्यूज पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और इस तरीके से ग्रुप बना के ये क्राइम करते रहे हैं, तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसा भी लगा कि कुछ इन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम, इसलिए सेक्शन 238 ऑफ BNSP इसमें लगाया गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब अटैच किया गया है। रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट में बोला था कि उनके अगेंस्ट उनको जब असॉल्ट किया जा रहा था तो उनको SC/ST के धारा के अंदर उनको अब्यूज किया गया, और उसमें कुछ सेक्शन 3 जो है उसमें डिफाइंड है कि अगर कोई जाति के नाम पे आपको अब्यूज करता है और असॉल्ट करता है तो SC/ST एक्ट उसमें अट्रैक्ट होता है। तो हमने अकॉर्डिंगली वो सेक्शन भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से ओपिनियन लेके लगाया है, और इन्वेस्टिगेशन SDPO पणजी को सौंपी गई, क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि द ऑफेंसेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय DYSP रैंक ऑफिशियल। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सारे अक्यूज जो है अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है, और जैसे जैसे हमको एविडेंस मिल रहा है हम आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो SDPO पणजी के टाइम का। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें इनको रामा कानकोनकर जी को हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि अभी भी डिस्चार्ज होने के बाद कंटिन्यू है, और ये दिखाता है कि हम लोग कितने कमिटेड हैं कि इस केस में जस्टिस हो, रामा कानकोनकर जी सेफ एंड सिक्योर फील करें, और जो भी इसमें लीगल एक्शन हो सकता है हमारी तरफ से वो हम ले रहे हैं। Now the investigation on this case is taken by me, and presently one of the accused, Neneto Cardozo, has filed for a bail before the Honorable Sessions Court, and the same is pending before the court. And tomorrow at 2:30, the hearing of the bail will be heard by the Honorable Court. So we have opposed it, and investigation in this case is conducted or is being conducted on merits. So we will try all best to collect the evidence in this. Whatever comes in the evidence, we will collect the evidence and will place before the court. So in this case, Rama Kankonkar has made statement alleging name of some politicians. So during the first, when my PSI Manjunath Naik went to record the statement, these names are not figuring in that. Even we have video recorded the statement of Rama Kankonkar. So now this is the improvement. So there has to be some connect. So we are investigating in that angle also. So as of now, the investigation is conducted with full force. So nothing, no pressure of any sort of in this investigation to this. So investigations will be conducted on merit. I want to add कि जो हमने स्टेटमेंट लिया था रामा कानकोनकर जी का, उसमें मैंने जिस दिन स्टेटमेंट लिया था उसके 2 दिन बाद आई हैड ब्रीफ मीडिया कि व्हाट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट। उसमें जो नाम थे वो ऑलरेडी हमने उन पर कार्रवाई कर रखी थी, और जो स्टेटमेंट्स में जो भी आगे आया तो उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। जैसे जैसे एविडेंस के साथ कनेक्ट होगा बाकी एविडेंस के, स्टेटमेंट में जो भी चीजें आती हैं उसको हमको कोरोबोरेट करना पड़ेगा बाकी एविडेंसेस के बेसिस पे, और अकॉर्डिंगली फिर हम एक्शन लेंगे। सर, नाउ द विक्टिम इज मिसलीडिंग द इन्वेस्टिगेशन। आई कैन नॉट से दैट, इट्स जस्ट दैट कि जो विक्टिम का पहला स्टेटमेंट होता है दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है दैट इज सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स
तो उसका एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ा सा वीक होता है, तो मैं बस उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी सब पे रहे, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी भी उसमें एडेड है। अच्छा, तो सब पे अभी अट्रैक्टिव स्टेटमेंट लेने में और इंटरोगेशन करने में फर्क होता है। इंटरोगेशन में हम जो भी हमारे सामने होता है, अक्यूज है या विटनेस है, उससे हम पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। बट स्टेटमेंट में जो विटनेस है, ही इज फ्री टू गिव स्टेटमेंट, ही इज फ्री टू स्पीक हिज माइंड। तो जो उन्होंने बोला वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। इट कैन बी टेकन, वी विल सी कि अभी जरूरत है कि ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से, क्योंकि हमको भी जरूरत थी कि रामा कानकोनकर जी जो भी बोलेंगे उसके हिसाब से हम आगे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, लेकिन थोड़ा उसमें डिले हुआ। लेकिन फाइनली 2 अक्टूबर, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। तो हमारा आईओ जब भी जाता है तो पहले मेडिकल ऑफिसर से ओपिनियन लेता है कि वेदर विटनेस और विक्टिम इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। तो डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि इज फिट टू गिव स्टेटमेंट, बट देयर इज अ रिटन रिक्वेशन फ्रॉम आवर साइड, और उस रिक्वेशन पे नीचे डॉक्टर्स के रिमार्क हैं। हर दिन अलग अलग डॉक्टर तो अलग अलग रिमार्क दिया उन्होंने, अलग अलग डॉक्टर ने रिमार्क दिया, बट सेम रिमार्क था कि विटनेस इज फिट टू गिव स्टेटमेंट। बट जब हमारे आईओ जाते थे तो उन्होंने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया कि मैं अभी फिट नहीं फील करता। जब भी हमको ऐसा लगता है कि पुलिस की तरफ से कुछ अपडेट करने की जरूरत है तो हम डेफिनेटली करते हैं। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट अभी भी मतलब मिंगेल और फ्रांसिस ने जनीटो को अप्रोच किया, और इन्होंने मिलकर, तीनों ने मिलकर कुछ दिन पहले 18 तारीख से 4-5 दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक इसके ऊपर करेंगे रामा। जो अब अभी तक स्टेटमेंट में जो आया है इन लोगों के कि मिंगेल के साथ इसका पहले भी डिस्प्यूट, एक स्कफल हुआ था, और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो सब है। लेकिन उसको कंक्लूसिव तरीके से अभी कहना मुश्किल है। जारी इस पर इन्वेस्टिगेशन रिलीज हुआ था, हमारी तरफ से तो इंक्वायरी चालू, हमारी तरफ से कोई ऐसा पब्लिक नहीं हुआ है स्टेटमेंट। एक कॉपी हमने जो विटनेस है उनको भी दी जाती है, जिसका हम स्टेटमेंट लेते हैं। हमारी तरफ से पूरा रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल है। जब फाइनली चार्जशीट फाइल होगी तब क्लैरिटी इसमें आएगी। Gupta said that at first, when cops approached Rama for his statement, he resisted cooperation, delaying the process. He insisted every step has followed standard procedure, from evidence collection to forensic analysis and suspect interviews. हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्विफ्टली एंड फेयरली की है। जैसे जैसे एविडेंस सामने आया है हमने इसमें कार्रवाई की है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं हमने दिखाया है। जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को अप्रीहेंड कर लिया था। वो हमने अप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज। उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से, और उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच कर रहा था। तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के, हमने जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था। ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी 18 सितंबर 2025 को। उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे, जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर, जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था, तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया। मिंगेल, फ्रांसिस और जनीटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा कानकोनकर के ऊपर अटैक किया जाएगा, क्योंकि रामा कानकोनकर ने मिंगेल और जनीटो को टारगेट किया था समय पे, और इनका पास में स्कफल भी हुआ था। जो हमने केबल जो यूज की गई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में, वो हमने सीज की है। 3 जो 2 व्हीलर्स थे जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज हमने एनालिसिस किया था, तो उसके बेसिस पर 2 व्हीलर्स 3 दिखाई दिए थे, उनको तीनों को हमने सीज किया है। अक्यूज के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद हुए, उनको भी हमने पंचनामा ड्रॉ करके अटैच किया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हमने सेक्शन में अड्यूस किया, क्योंकि ये अक्यूज पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं और इस तरीके से ग्रुप बना के ये क्राइम करते रहे हैं। तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इंग्रेडिएंट अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसा भी लगा कि कुछ इन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम, इसलिए सेक्शन 238 ऑफ BNS केस में लगाया गया। मिंगेल और फ्रांसिस ने जनीटो को अप्रोच किया, और तीनों ने मिलकर कुछ दिन पहले 18 तारीख से 4-5 दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि हम
अटैक इसके ऊपर करेंगे रामा। जो अब अभी तक स्टेटमेंट में जो आया है इन लोगों के कि मिंगेल के साथ इसका पहले भी डिस्प्यूट एक स्कफल हुआ था और उसमें उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ बनाए थे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो सब है, लेकिन उसको कंक्लूसिव तरीके से अभी कहना मुश्किल है। जानिए इस पर इन्वेस्टिगेशन। Yet, visuals from the scene paint a troubling contrast. Officers handling evidence barehanded, no gloves, no safety protocol. Would you call that by the book? STPO Naik added that in Rama's earlier video statement, no names were dropped. He called the naming of CM Sawant and County in yesterday's statement a new improvement and said that the investigation would now probe that angle. Rama Kankondkar has made statement alleging name of some politicians. So during the first, when my PSI Manjunath Naik went to record the statement, these names were not figuring in that. Even we have video recorded the statement of Rama Kankondkar. So now this is the improvement. So there has to be some connect. So we are investigating in that angle also. Tourism Minister Rohan County wasted no time firing back. काल ताणे मुख्यमंत्र्याचे आणि म्हजे नाव घेतले and it became a sensation. आज प्रश्न असा, रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस. रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळे, सगळे लोक मेळे. रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें. रामान स्टेटमेंटूय दिलो आनी हे पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें. He said if Rama knew political figures were behind the attack, why not name them earlier in his video statement or before discharge? आता मुख्यमंत्रीक ताणें जेन्ना आरोप केलो त्या 23व्या दिसा, जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री थंयच गेल्लो तेन्ना कित्याक बोट दाखोवन सांगूना की मुख्यमंत्री तूं आसा म्हणून हातून. आनी रामा म्हणटा तो सरळ उलोवपी मनीस. ताज्या खातीर ह्या 23व्या दिसा जेन्ना रामा भायर सरतालो तेन्ना रामाच्या तोंडान उतरां कोणे घाली उलोवपाक, हाजेर खरी इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. County pointed out that CM had visited Rama at GMC and at the time no such allegations were made. He questioned why wait for that very moment to speak names. He went on to demand an inquiry into who is pushing or influencing Rama to produce these allegations now, hinting that even Rama might be a pawn in someone else's design. Opposition leaders, smelling injustice and opportunity, pounced. Congress, Aam Aadmi Party, Goa Forward and others demanded that Sawant and County immediately step aside from overseeing the investigation. Their message, the Home Minister cannot investigate himself. Rama Kankondkar हाणें जे स्टेटमेंट केला की ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटेचेर दुबाव आसा, हे एक सिरियस एलिगेशन आसा आनी ते लायटली घेवपाक शकना. कारण हे कायदो सुवेवस्था वापरपाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांची, आनी तेच जर कायदो हातीन घेवन लोकांक जर मारबडे करपाचें काम करतात जाल्यार हो सामको सिरियस इश्यू आसा. आनी त्या खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटे हाणें ताबडतोब आपले पदाचो राजिनामा दिवन एक फेर प्रोब करपाक मुखार सरपाची गरज आसा. एक ज्युडिशियल प्रोब जावपाक जाय आनी तें जर फ्री एंड फेर जातलें जाल्यार मुख्यमंत्री आनीक मिनिस्टर रोहन खंवटे हांकां दोगांयकूय राजिनामा दिवचो पडटलो, नाजाल्यार हे इन्व्हेस्टिगेशनाचेर इफेक्ट जातलो. तशेंच आमचे पंतप्रधान जी चुपकी साधून आसात ताणें आपले सायलन्स ब्रेक करपाचें आनी गोंयच्या लोकांक एक विश्वास दिवपाचो की ह्या सरकाराचेर जो एक पब्लीक आउटक्राय जाल्ली आसा, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा, तेका जर परत कॉन्फिडन्स दितले जाल्यार पंतप्रधानान इमिजिएटली हांगा लक्ष घालून ह्या सरकाराची क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करपाची गरज आसा. पण आज रामान जेन्ना भायर हॉस्पिटला भायर जे स्टेटमेंट केला, दीज आर व्हेरी शॉकिंग स्टेटमेंट्स. इनफॅक्ट ताणी पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डावट घेतला, ताणी ज्या तरेन जे स्टेटमेंटाचे रेकॉर्ड जाल्ले ताजेर डावट घेतला आनी ताजे जे स्टेटमेंट रेकॉर्ड आसा तो म्हणटा की ताजो व्हिडिओग्राफ जाल्लो म्हणून. So I think it is time some independent authorities, either CBI
और अशा तरेचे ऑथॉरिटी कडेन दिवचे पडटलें इन्व्हेस्टिगेशन टू फाइंड आउट व्हॉट इज द रियल स्टेटमेंट दॅट ही हॅड गिवन एंड वेदर दॅट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट which had come out. इनफॅक्ट ताजो स्टेटमेंट भायरूय येवंक जायनाशिल्लो, तोय खंय तरी भायर आयिल्लो. सो पुलिसाचे जे एंटायर कंडक्ट आसा ताचेर खंय तरी डावट येता. ताणें जेन्ना अशा प्रकारचो स्टेटमेंट केलो की चीफ मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड इन दीस म्हणून, तेन्ना हातूंत भितर इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड स्टेप असायड. आज जर ताणें आपले सेफ्टीचेर कन्सर्न दिले आनी ज्या तरेन हें घडटा आनी ताचेर परत जर हल्लो जालो जाल्यार ताका सरकार सर्वस्वी जबाबदार आसतलो. ताका लागून म्हाका दिसता इमिजिएटली ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक जाय, फुल पुलीस प्रोटेक्शन दिवंक जाय. आनी एट द एंड ऑफ इट द ट्रूथ शूड कम आउट, बिकॉज आज जे ताका जालें तें कोणाकय जावंक शकता. आमी एज पॉलिटिशियन्स सगळे ताचे बरोबर राविल्ले, आमी डिमांडूय केल्ले, आमी रस्त्यार आयिल्ले, आमचेर ऑफेन्सूय रजिस्टर जाल्ले आसा. पण खंय ना खंय तरी पुलीस जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा तातूंत लॅब्स दिसता. सो इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करचें पडटलें हातूंत. आनी इफ द स्टेटमेंट्स वर ट्विस्टेड, जो रेकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आसा आनी ताचो जो व्हिडिओचेर दिल्लो स्टेटमेंट आसा, इफ दीज हॅव बीन ट्विस्टेड, then I think clarification has to come immediately, and that is why independent which is not Goa police, because खंय ना खंय तरी ताणें गोवा पुलिसाच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर डाउट क्रिएट केला. ताणें एलिगेशन केला की that is against the chief minister, and I think chief minister, it is time chief minister sets aside and hands over, or the minister sets aside, and this investigation is done by an independent agency. पण आज रामा सारख्या एका इंडिपेंडंट एक्टिविस्टान अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करप आफ्टर असॉल्ट ऑन हिम, अँड आफ्टर हिज स्टेटमेंट which has come out, it is very shocking, because खंय ना खंय तरी पुलिसाचे इंडिपेंडन्स कमी जाला, पुलिसाचे इंडिपेंडन्स गेला काय हाजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आणि जेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचेर अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना आयदर ज्युडिशियल कमिटी ऑर एन इंडिपेंडंट एजन्सी, सीबीआय तांचीच आसूं, पण ऍटलीस्ट एन इंडिपेंडंट एजन्सी विच इज इंडिपेंडंट ऑफ गोवा पुलीस, हांचे कडेन तरी इन्व्हेस्टिगेशन दिवंक जाय आनी हे फायंड आउट करपाक जाय. कारण ट्रूथ शूड कम आउट. At the end of it, there are CCTV footages, there are recordings, there are video recordings which were being made. And whatever that he has narrated as far as the incident is concerned, whatever that is part of the videos of the incident that has been recorded, has to come out for people to know. It may be, as the investigation reveals that, it will interfere with the actual investigation process. पण आज असो आसा की वो पब्लिक इश्यू जाला. दिस इज नो लॉंगर एन इश्यू ऑफ रामा काणकोणकर. This has become an issue of people. This has become an issue of the safety of the people. This has become an issue for the police department's failures and interference of political powers in the investigation. All said and done, whether actually whoever is involved, हे जर हाजो जर मास्टरमाइंड जो म्हणटा चीफ मिनिस्टर किंवा ताणें रोहन खंवटेचेर जे आज बोट दाखयला आणि तांचे जर तातूंत इन्व्हॉल्वमेंट आसा खंय तरी हे सगळे इन्व्हेस्टिगेट जावचे पडटले. खंय ना खंय तरी हे करना जाल्यार आज ते बोट तशेंच उरतले. आनी हो जर डावट क्रिएट केला की ताणें आपूण सांगिल्लें पूण ताणें पुलिसांनी घालूना म्हणून जे हे म्हटलां, आय थिंक दॅट video recording of his statement which he has made has to be made public for people to know the truth, because we have stood by him and we want to know the truth behind what has happened, because आमचे समोर statement record जावनाशिल्लो पण this has created doubt on the police department. They supported Rama's request for an independent agency for the investigation. They warned, this is not just about Rama, it's about Goa's political accountability, the safety of citizens and the boundary between power and impunity. Let's take a step back. Rama Kankonkar, activist turned ST leader, was brutally attacked, left beaten, smeared with cow dung and threatened merely for speaking out. And now, in retort, he's naming those at the top. The attack took place near Karazalem, Panaji. Reports say 6 men ambushed him, hitting him with chains, tearing his shirt, even smearing cow on his face.
The assault triggered an outcry. Protests erupted across Panjim. Crowds gathered at the DGP's office. Main roads blocked. Party offices vandalized.
Rama Kankonkar's discharge may have closed one chapter, but opened a far more explosive one. तुम्ही म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचे दुबाव आसा आणि कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयली हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयचे हितून अटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येयना मनान म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो FIR रेजिस्टर जावन ना हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जाका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना मार हांवें खाल्लो अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता हांव आजून क्लियर कट सांगूंक सोदता की म्हजेर अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना आमच्या आमदाराचे नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हे काम पुलिसांचेर जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलिओ मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर पुलीस एकूय शब्द काडिना तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता पूण तेंच्यांनी जे अटॅकर जातलो तेंचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्वेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता हे इन्वेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू. He says the attack was political. He suspects the CM and the tourism minister. He states there's lapse in political investigation. Political heavyweights cry foul. Opposition demands resignations. Protest rage. Now, the stake is more than one man's safety. It's Goa's faith in its institutions. It's whether speaking up will be punished or protected. So where does Goa stand? In a state where the Home Minister is suspected of being involved by the victim, can justice find room to breathe? Or will political pressure suffocate truth? The attack on Rama was violent. The protests were thunderous. The battle now is metaphysical between power and principle. And until this case is decided, no citizen who dares to speak will ever feel safe. Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.